him and Azad force that India got liberated. Maybe otherwise it would have taken another 50 to 100 years more. So he was the main architect and of the Indian freedom struggle. And Azad Hind, which many of us don't know, the Azad Hind government was formed in 1943. Yes. On 21st of October, if I well remember. And this government was recognized by 11 countries on the globe at that point of time. So it was the first government, and Netaji was the first Prime Minister of the Akhand Bharat. This government had their own currency, they had their own bank, and it was a full-fledged government. Hello. So Subhash Chandra Bose, as a person, as a character, as a personality, I think he is the role model for any young person to have in today's world. He, right from a very young age, he was into social service. He had a very high inclination for spirituality. He was very much inspired by Swami Vivekananda, and he dedicated his life. Right from the young age, his vision or his purpose in life to help the poor, the needy, the downtrodden. He was highly inspired by Swami Vivekananda, and also he was also very highly inspired by Chhatrapati Shivaji in terms of the execution. And that's why when in his teens, or when he went to the Himalayas, somewhere around when he was doing his higher secondary, and when he came back, and then with his own realization and whatever he studied, he felt that he declared himself as a sannyasi Shainik. So he wanted to have the combination of Swami Vivekananda and Chhatrapati Shivaji, and he felt that is the right combination by which India can attain freedom. And when he talked about India attaining freedom, it is not about the political freedom only. It is about the people of the India attaining freedom from poverty, from illiteracy, from caste system, and to give them social justice. Because at that time, that is what India needed, or people of the India needed. So, and he was very clear about his purpose in life. He was a very brilliant student. He cracked the ICS in first attempt, and when he came back, on the very first day he resigned as soon as he reached Mumbai. Sure. So he was very clear. He was very clear of what he wanted to do. He wanted to serve people. He wanted to serve mankind. And so that's why I said he was a role model even for today's world, for a young generation. We need people like Subhash Chandra Bose, young people who are brilliant students, who want to contribute to this world and make this earth a better place, and for the betterment of human civilization. He was a very modern man. He believed, if we talk about the 5-year planning commission, it was he who introduced when he was the president of the Indian National Congress in 1938. And he believed that India should have, unlike Mahatma Gandhi, he believed that India should have large-scale industries. India should have economy. India's economy should be based on industries, on education, and all those welfare schemes. Yes, if India would have, unfortunately, we did not have him as in the government when India got full independence. If you talk about 1947, maybe if he would have been the first at that time the Prime Minister, or he would have been in the government, India would have got a much better start. So it would have been ahead of China today. If India is a $4 trillion economy today, India is China, $20 trillion economy, I think India would have been ahead of China. So we had a delayed start. So we had a slow growth in the beginning. And to talk about, we have already said, Subhash Chandra Bose was he was the main architect, or the main person for which India got attained freedom.
Besides this, India, Subhash Bose's impact was very much in a very international scenario as well, because of Dadaji's force, because of the India getting independence, there are many other countries which also got independent from 1940 to 1951. So he was not only he was an important man for India, he was an important man for the world history in the modern times. So he was a great man, a great soul, and a true inspirational leader, a inspirational global leader. And on his birthday, I pay homage, I pay tribute to him. Let the spirit of Subhash Bose, Netaji, enlighten every heart of the people of this globe. And long live Netaji Subhash Chandra Bose. Jayanti. Jayanti. I will request Jayanti to speak something. ये नेताजी और शिवाजी महाराज ये दोनों आदमी एकच आहे. त्यांचं काय स्पष्ट असं आहे की आम्ही एकत्र होऊन कसा सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू आणि पुढे कसं जाऊ, सोसायटीच्या सगळे मार्गाच्या लोकांच्या कसं आम्ही एकत्र आणू आणि काय काय प्रॉब्लम सॉल्व करो और काय करूँ. दो चीज मैं बता रहा हूँ. वन थिंग इज शिवाजी महाराज का जो तलवार था वो नेताजी को प्रेजेंट किया गया था. आज के दिन पे वो इंग्लैंड पे है, ठीक है, रखा हुआ. उसको लाने की बहुत कोशिश किया गया है, लेकिन 2-3 तलवार है, हमें पता नहीं एग्जैक्टली कौन है, वो भी हमें बता नहीं रहे, उनकी खजाना से दे नहीं रहे. बाघ नखा आने वाला है, ठीक है, ओके, बाघ नखा का लोन पे देने वाले हैं, लेकिन ये सब चीज कोशिश चल रहा है. और दूसरा जी, अम्बेडकर जी ने एक चीज स्पष्ट बोला था उनकी डेथ के पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो प्लस पॉइंट है कि मैंने हम लोग को अनफॉर्चुनेटली अभी तक सुभाष जी को जो मिलना था, सुभाष जी को जो प्रेस्टीज, जो रिस्पेक्ट मिलना था, वो दिया नहीं गया. थैंक गॉड अभी का सरकार हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, जो पहले नहीं था अभी कर रहा है. और दूसरी बात है कि जब हम लोग, मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहता हूँ, बापू जी भी बहुत बड़े आदमी थे. जब बापू जी का जन्मदिन में नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जा रहा है, हम लोग ने एक ही दरखास्त किए भी थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन में हम लोग क्यों नहीं करेंगे. अभी तक इसका कोई उत्तर, कोई रिप्लाई ना केंद्रीय सरकार से आई ना और किसी से आया. पश्चिम बंगाल में आज के दिन में छुट्टी है, माइंड भी वो बंगाली थे शायद इसीलिए. लेकिन अगर देखोगे दूसरे स्टेट में पश्चिम बंगाल और झारखंड छोड़ के नेशनल हॉलीडे बने, स्टेट हॉलीडे और कहीं पे दिया नहीं गया है. तो हम लोग का एक ही रास्ता है, एक ही प्रिंसिपल है. वो जो प्रिंसिपल पे चलते थे, हम लोगों को वही प्रिंसिपल फॉलो करना है. स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ऑनेस्ट टू द पब्लिक, एंड स्ट्रगल यू विल गेट द सक्सेस. जो उनका मेन मंत्र था, वो कभी हारते नहीं थे. ही नेवर क्विट. उनके नाम के अफवाहें बहुत फैलाई गई थी कि वो भाग गए थे. वो भागने वाले बंदे नहीं थे. वो एक दूसरे प्लेनेट के थे, मैं बोलूंगा. जो आदमी बचपन में अपने घर छोड़ के सन्यास बनने के लिए निकल गए थे, वो फिर वापिस आए थे. उसके पिताजी मम्मी को भी मालूम था वो आदमी क्या हो सकता है, वो कभी भी किसी भी वक्त प्रकट हो सकता है. जब डिक्लेयर किया गया था कि उनका देहांत हो गया है फ्लाइट में, एयर क्रैश में, तब भी बड़े बड़े हस्तियां, इंटरनेशनली बड़े बड़े हस्तियां, उन लोग मान नहीं पाए. तो उन लोग को अच्छी तरह मालूम था कि वो वापिस आएंगे. तो इसी के डर के मारे, डर के सिवाय उन लोग चुपचाप थे, बैठे हुए थे. हम लोग के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी को भी ये बताया गया था कि अगर वो आ गए तो आपको सीट छोड़ना पड़ेगा. तो ये सब दबाव के कारण उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित किया गया था. अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो तकमा हटा नहीं है. वो तकमा अभी भी है, शायद बहुत जल्दी वो तकमा हट जाएगा. इसी के कारण शायद वो इंडिया वापस नहीं आ पाए. अगर आए भी तो वो छुपे हुए थे, क्योंकि अगर उसको पकड़ लेता तो इंडिया का बदनाम हो जाता. ये सब दिमाग में रखने के बाद उसने किया. उनका जो सेक्रीफाइस है वो बहुत है. ये प्रशांत महासागर की से भी ज्यादा है उनका जो सेक्रीफाइस है. इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ. जय हिंद, वंदे मातरम.